Good morning, class 11th. As you all know, we are doing a chapter which is based on our constitution as the living document. We have already covered few topics earlier. We have started or dictated about the whether Indian constitution is flexible or rigid, or how can we make amendments in our constitution. We have also studied about Article 368. Today, from the topic, I am taking a new topic, that is special majority. And why do we need a special majority? Or what does the special majority means? When we talk about special majority, number one, I should tell you that in our constitution, under Article 368, it has been clearly stated that our constitution can be amended when the special majority in parliament in both the houses separately can pass or can give their permission. Basically, there is no special procedure mentioned in our constitution. Nothing has been written so far that हम इस special majority को किस तरीके से prove करेंगे, and in some countries this special majority means different for different persons. Number one, when in Indian constitution we talk about special majority, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं it means that half of the total strength of our house. For example, if it is Lok Sabha, then 545 हमारे members हैं, approximately 272 members special majority constitute करते हैं. ठीक है, जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसकी 50% पॉपुलेशन. समटाइम्स हम ये भी मानते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मीन्स द सपोर्ट सिस्टम और द सपोर्टिंग पीपल हु आर एक्चुअली वोटिंग. सब लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी वोट दिए गए हैं उसमें से 2/3 मेजॉरिटी क्या कहती है. दोनों हाउसेस अपना अलग अलग काम करते हैं. कई बार दोनों हाउसेस के अलग अलग अमेंडमेंट डिसीजंस में चेंजेस भी होते हैं. Sometimes there is also a possibility that a law can be recommended to amend by one house but can be rejected by another house. In such a situation, bill can be present separately in both the houses again, and if a common output can't be taken, a common decision can't be there, then a joint session is held. जॉइंट सेशन के लिए भी ये ज़रूरी है लोकसभा प्लस राज्यसभा के 50% लोग क्या कह रहे हैं, या जो लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन हो रहा है उसमें जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी कितनी मेजॉरिटी अवेलेबल है. ठीक है, हम ये कहते हैं एक्चुअली भीमराव अंबेडकर ने स्पेशल मेजॉरिटी का क्लॉज इसलिए डाला था क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही मेजर डिसीजन लें रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमने स्पेशल मेजॉरिटी की बात की थी तो स्पेशल मेजॉरिटी जो है many constitutions have a different number regarding this. For example, if we talk about the constitution of United States of America, South Africa or Russia, they follow the point or the feature of special majority, but it varies. In South Africa and Russia, special majority means 2/3, whereas for certain countries, in USA it basically means 2/3, whereas in South Africa and Russia it means 3/4 majority should be there. Similarly, बहुत सारे constitutions में, for example in Switzerland, before amending the constitution, people's participation in the process of amendment is very much required. Basically plebiscite, you have read about it, that is required. तो भीमराव अंबेडकर ने भी हमारे लिए यही कहा था. उन्होंने एक लाइन बोली थी, he stated that
Those who are dissatisfied with the constitution need only two-third majority. If they are not able to obtain even that, their dissatisfaction with the constitution cannot be deemed. Cannot be deemed का मतलब है हम उसे consider नहीं करेंगे and it cannot be shared by the general public. आपकी बुक में एक पेज नंबर दिया हुआ है 203, वहाँ पर इस तरीके से भीमराव अंबेडकर का पिक्चर दिया हुआ है और जो मैंने लाइन बोली है वो वहीं पर ही स्टेटेड है. दूसरा तरीका जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का भी टॉपिक आपकी बुक में अलग है, वो इस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, ऑन पेज नंबर 204. रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के लिए हम ये कहते हैं कि फॉर अमेंडिंग फ्यू ऑफ द आर्टिकल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली स्पेशल मेजॉरिटी इज नॉट सफिशिएंट. Specifically, if we see, if the aim of the amendment is related to the distribution of powers between the central or the state government, or there are issues which are related to the representation, or there is a dispute or a question mark which is related to the you can say the sanctity of the fundamental rights, in such a situation the constitution must ensure that all the states should have equal right for amending the constitution. If one state is facing problem, the other states are not, so it's not possible that other states enjoy and one state doesn't. ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इफ़ यू वांट टू गिव टेस्ट और इफ़ योर टीचर्स वांट टू टेक टेस्ट, इसके लिए आई एम डिसाइडिंग अ सर्टेन डे, से डेट एक्स. फॉर दैट द 2/3 majority of your class should be there. 2/3 is enough. If 20% students are flunking off, it doesn't matter. 2/3 majority का होना ज़रूरी है, प्लस 50% सब्जेक्ट टीचर्स का भी एग्रीड होना ज़रूरी है कि we also want to take test. Only then the test series can be conducted. So changing constitution doesn't mean that only central government or the houses of parliament can take decisions. State legislatures, which work as legislative councils or legislative assemblies, also play an important role. Fine. For today's, it is over.